ओके तो हमारे सामने जो पेपर है वो अक्टूबर नवंबर 6 है, पेपर 3। उस टाइम पे वेरिएंट्स नहीं हुआ करते थे। The case study is low cost airways, and the purpose of this particular case study is this 1B. Assess the usefulness of sales forecasting to low cost airways. 8 marker question hai, and we need to tell the usefulness of this particular technique to the business. Case study की scanning करते हैं, and then we will develop our answer. Low cost airways. The newspaper headline was quite clear. क्या थी? Another year of record profit for low cost airways. It was identified that the airline has made a significant profit, यानी अच्छा प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, आगे पढ़ें इसके अंदर। The airline was set up by Gavin Lara just 5 years ago as a retired pilot for a major international airline. He had become bored staying at home. वो एक retired pilot थे, and then they started an airline. He had met a friend, Sally Zhu, who owned her own small plane. They decided to offer flights to passengers to local towns and cities. एक pilot, एक plane मिल के business start किया. Gavin and Sally had to meet certain legal requirements even after the cost of these was accounted for. They were still able to charge much lower fares than larger airlines. Compared to larger airlines, जो ये tickets charge कर सकते थे वो काफी कम थी. ठीक है, Even after the अच्छे हो गया, they decided to create a private limited company. Legal structure हमें पता चल गया है. ठीक है, that इनका legal structure क्या था? Private limited company थी. सही है, आगे बात करते हैं. Low cost airways. अच्छा, they decided to create a private limited company. Low cost airways and lease 2 more aircrafts extending the routes they offered. यानी एक तो एयरक्राफ्ट इनका ऑलरेडी था, इन्होंने 2 और लीज करे. They had to recruit other trained pilots, यानी 2 और एयरक्राफ्ट से तो पायलट्स की और जरूरत पड़ी. The business could not afford the cost of training new pilot itself. Now, after 5 years of rapid growth, record profits were being made. Sally and Gavin congratulated themselves on their success. यानी business successful हो चुका है. आगे चलते हैं. Low cost airways filled a gap in the market for low cost flights without the extras that added to the other airlines cost. यानी मार्केट में गैप था, लोगों को चीप एयर ट्रैवल चाहिए था और लो कॉस्ट एयरवेज वो प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि कोई एडिशनल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते थे, जिसकी वजह से इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम थी. They did not offer food on board, charged passengers for all drinks, and only allowed hand luggage onto the planes. No large bags could be carried. Tickets could only be bought via the internet. यानी ये सारी फैसिलिटीज की वजह, ये सारे एक्शंस की वजह से इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो गई? कम हो गई. Business success brought problems too. Gavin and Sally changed the organizational structure of the business several times as it grew. जाहिर सी बात है, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो हुआ, इनको अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी क्या करना पड़ा? चेंज करना पड़ा. अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ी होगी. A senior management team was recruited and this added 2 levels to the hierarchy. Hierarchy के अंदर further levels add हो गए. These changes had not been popular with the staff who had become used to Gavin and Sally's laissez-faire leadership style. जो स्टाफ था वो laissez-faire के हिसाब से खुश था, लेकिन अब लेवल्स आ गए तो वो खुश नहीं है, इश्यूज आ रहे हैं. The new management team insisted on quicker centralized decision making and this reduced discussion with staff. Complete opposite style पे चले गए. An appraisal system for pilots offered them substantial bonuses for good attendance and timekeeping. The turnover of staff in other parts of the business has increased recently. यानी pilots को तो अच्छे incentives मिल रहे हैं, लेकिन other parts के अंदर turnover बढ़ गया है, workers छोड़ के जा रहे हैं. क्या हुआ है? One lever was heard to say we do not get paid as much as workers and bigger airlines. यानी मार्केट में पे अच्छी है और ये लोग अच्छी पे नहीं दे रहे. But we no longer have the advantage of working for a small business. ठीक है, अब बात ये भी आ रही है दैट ये बोल रहे हैं कि जो एक स्मॉल बिजनेस में काम करने का एडवांटेज था वो भी नहीं मिल रहा, मतलब एक्सपोजर नहीं मिल रहा, कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन में शायद इश्यूज हो सकते हैं. सेपरेट प्रॉफिट सेंटर्स हैव बीन क्रिएटेड फॉर ईच रूट एंड फॉर कस्टमर सर्विस. प्रॉफिट सेंटर्स क्या होते हैं? ये बिजनेस के अंदर वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पर कॉस्ट एंड रेवेन्यूज को एलोकेट करके देखा जाता है कि आप कहां से कितना अर्न कर रहे हो. All of these profit centers are now achieving profits above budgets. Apart from the car hire division, ठीक है, कार हायर डिवीजन के अलावा सब प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं जो बजट था.
This newly established division records higher cost and lower revenue than expected. यानी जो बजटिंग करी थी उससे रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज्यादा. आगे बात करते हैं. The business was now at a very important stage of its development. Sally had forecasted the demand for low price flights for the next 2 years. यानी सेल्स फोरकास्टिंग की बात आ रही. नेक्स्ट 2 years के लिए उन्होंने प्लानिंग करी है. She told Gavin, "I am confident that sales of our ticket will continue to rise by 20%." प्लानिंग क्या हो रही है? सेल्स 20% से राइज होंगी. उसी हिसाब से लोग रूट्स प्लान करेंगे. सही है, ट्रिप्स प्लान करेंगे. We will need to recruit more aircrafts to meet this demand. यानी और एयरप्लेन्स लाने पड़ेंगे. We may have problem recruiting enough extra staff of the right quality. यानी वर्कर्स भी लाने पड़ेंगे. I am also looking at opening up a new operating base at one of the two airports, either in city X or city Y. कहीं भी इनको एक अपना बेस सेटअप करना है. The finance director has done some calculations for me to compare these two locations. उनका डेटा दिया हुआ है. Gavin was pleased to hear this news, but he had other ideas. He was not getting any younger, and he wondered if he wanted the stress of owning an even bigger company. जाहिर सी कंपनी बड़ी होगी तो स्ट्रेस बढ़ेगा. वो क्या सोच रहा है? That I have been thinking instead of getting even bigger, why not consider taking the airline up market? यानी प्रीमियम सेगमेंट में क्यों ना चले जाएं? अभी ये बिल्कुल लोअर एंड ऑफ द मार्केट में, अभी प्रीमियम सेगमेंट में जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का जंप इतना फीजिबल नहीं होता. We could keep the same number of aircrafts and staff, but could charge higher fares for a better quality service. यानी लेकिन आप देखो ना, अगर प्रीमियम पे जाएंगे तो एयरक्राफ्ट की जो इंटीरियर है, उसकी जो फैसिलिटीज है, कंफर्ट, उस पर भी काम करना पड़ेगा. उससे जाहिर सी बात है प्राइस ज्यादा चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ जाएंगे, लेकिन और फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी. उसके हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी. ठीक है, बट डू आई नीड टू बी वरिंग अबाउट थिंग्स लाइक दिस? आई मस्ट से द टेक ओवर बिड फ्रॉम यूनाइटेड एयरलाइंस. एक एयरलाइन ने इनको ऑफर दी कि ये इनका बिजनेस इनको बेच दे, तो यह वो भी कंसिडर कर रहे हैं. अपेंडिक्स सी के अंदर जरा हम चले जाते हैं. ये उसका डेटा है 2 लोकेशंस का. अगर वैसे देखा जाए तो इन्होंने सेल्स फोरकास्ट किया है कि इनकी सेल्स 20% से बढ़ जाएंगी, और इसके अलावा हमें ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है. लेकिन जाहिर सी बात है उसी की बेसिस के ऊपर हमारी फ्यूचर प्लानिंग होगी और फ्यूचर स्ट्रेटजीज डेवलप होंगी. ठीक है, तो अपने पेन पेपर्स ओपन कर लो, इसका आंसर लिखते हैं. assess the usefulness of sales forecasting to low cost airways. okay, स्टार्ट करें. इसमें जो डिफाइनिंग टर्म है वो क्या है? सेल्स फोरकास्टिंग. क्या है? सेल्स फोरकास्टिंग. तो उसी की डेफिनेशन से हम बात स्टार्ट करेंगे. सेल्स फोरकास्टिंग इज अ टेक्निक sales forecasting is a technique which enables the business to predict and estimate future sales on the basis of historical and past data which helps the business in planning and making key strategic decisions ठीक है. अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ, और हमें फोकस करना है स्पेसिफिकली यूजफुलनेस के ऊपर. द बेनिफिट to low cost airways of sales forecasting
of sales forecasting would be that as the case identifies that it has been estimated by Sally that ticket sales will increase by 20%, therefore low cost with the help of the data can plan accordingly that how many aircrafts will be needed that how many aircrafts will be needed and they will need to operate how many flights therefore as the planning will be done beforehand low cost will be able to effectively deal with the customer's demand and the customers may not need to wait or face delays if the planning is already done however the market is dynamic and constantly changing therefore it is not necessary that the data may always be accurate. ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज देखते हैं. The other benefit to low cost of the forecasting would be that it would help the airline to manage the cash flows such as
on the basis of the estimates, on the basis of the estimates, the cash flows, the cash flows can also be forecasted. The cash flows can also be forecasted and low cost can prepare beforehand, can prepare beforehand for any specific financial needs, for any specific financial needs. Full stop. The planning may reduce the uncertainty, may reduce the uncertainty and the risk faced by the airlines, faced by the airlines, and may enable low cost to effectively implement its decisions, and achieve its objectives, However, the usefulness will also depend on the accuracy of the data, used, तो यहाँ पर हमारा आंसर assess the usefulness of sales forecasting to low cost airways खत्म होता है. 8 मार्कर में था, तो उसमें थोड़ा एनालिसिस वगैरह वाला एलिमेंट थोड़ा सा डिफरेंट था कंपेयर टू द लॉन्गर आंसर्स.